So these are the 4 naming rules. So any doubt in this? Gaurav, any doubt? No, sir. Okay, now I am giving you one example. Yes, बच्चे. कीवर्ड जैसे इनपुट इंटीजर. Repeat your question, बेटा. सर कीवर्ड जैसे आप कह रहे थे कीवर्ड नहीं लगा सकते, कीवर्ड जैसे सर इनपुट या इंट. और भी कई कीवर्ड्स हैं. There are so many keywords are there. इंटीजर. हाँ, इंटीजर है ये, आपने ऐसे यूज नहीं करना. ठीक है. ओके. नाउ आई एम टेलिंग, आपने बताना है इनमें से कौन सा वैलिड है, इनवैलिड है. नंबर 1, एरिया ऑफ सर्कल. टेल मी वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट. यस ईशा. सर ये इनवैलिड आएगा. The reason is, yes, space is not allowed. Valid or invalid? सर वैलिड. Why valid? सर क्योंकि हमने स्पेस नहीं दी. हमने स्पेस नहीं दिया, नंबर हम यूज कर सकते हैं. ओके. Yes. सर इनवैलिड. Invalid. Why? Can start with the number. Oh yes, very good. Next is valid, invalid. इनवैलिड. Invalid. Invalid. Why invalid? Invalid. Only Underscore underscore के will be अलावा used. और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सर हम सकते. साइंस में यूज कर सकते हैं. Valid, invalid. Valid. वैलिड. Valid. Okay, good, beta, good. It means now the concept of identifier is clear. Okay. तो जहां पे भी हमने identifier word यूज करना है, identifier यूज करने हैं, remember these 4 naming rules, because if these any rule break here, so it means that is invalid identifier. It will generate error. Now next is here I am giving here b is equal to 20. 20 is a constant value. So this is called literal. These are called literal. Literals or constants. The fixed value given to any variable identifier is called literal. और कहीं पे भी हमने कोई fixed value use कर दी. Look at here. Fixed value. This is called which one? Literals or constants. So constants are of different type. They may be string. For example, hello. तो स्ट्रिंग जब भी डिस्प्ले करनी है सिंगल कोट या डबल कोट्स में करनी है. They may be numeric, like here 123 or 56.578. They may be Boolean. Okay, students, Booleans is sometime in our normal life we use some words like whether you passed or failed. Answer will be yes or no. There are 2 possibilities are there, yes or no. Whether you your admission in +1, yes or no. Okay,
whether are you eligible for voting, yes or no. These type of decisions are called true, false, yes or no. उसके लिए हम true लिखते हैं, T कैपिटल आता है, ये कीवर्ड्स हैं, false, ओके। और ट्रू फॉल्स हमने कहीं पे देखे भी थे, एट द टाइम ऑफ आउटपुट हमने कहीं पे चेक भी किए थे कि हम आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा था। टेल मी वेयर क्विकली। सर 9th में हमने स्क्रैच में किया था ऐसे। नो नो, आई एम इन टेलिंग अबाउट इन +1 इन पाइथन, Sir, arithmetic operations में. नॉट इन अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स। लिसनिंग। Yes, look at here. If I am saying 10 greater than 20, 30, answer will be false. So these literals are called Boolean literals. So we can give the ठीक है, तो हम ऐसे दे सकते हैं ना वैल्यू। लुक एट हियर, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं m is equal to true. This is a Boolean value. इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लेना, ओके। स्टूडेंट concept is clear? यस सर। Okay, so these are called Boolean. There is a special literal. जिसे हम कहते हैं none. N-O-N-E. None means no value. Clear? If I am saying here x is equal to none, it means I have not declared any value to the x. Okay? X की कोई भी value नहीं आई. This is called none. Special literal. None. N is in the capital letter. And last literal is literal collections. There are some type of collections. We will discuss this term because there is a little bit complex term. We will discuss this later on. So these are literals. Okay. Now I am going to put some questions. आपने बताना ये literal कौन सा है? Yes. String literal. String. Yes, very good. Yes. Numeric Numeric. literal. Numeric. Numeric. False. Boolean. 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 None. Special. Special literal. Special. Special. Special literals. Very good. Very, very good. Very nice. Now we are going to discuss these literals in detail. Okay. तो हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट literal I discuss string. Okay, I'm going to discuss string literal. So string literals can take alphanumeric values. इसमें symbols आ सकते हैं, कोई भी टाइप के symbol आ सकते हैं, इसमें alphabets आ सकते हैं, इसमें digit आ सकते हैं. So any type of character it can take. So example is your name, your address. Okay, and it is always enclosed within single character and in a single quotes and double quotes. Always remember. But remember one thing: if it is wrong, what is wrong in this? So हमने start single quote से की है पर end double quote से की है. Very nice, very nice. We are starting with single quotes
and closing with double quotes, that is a wrong. Start with single quote, close with single quotes, or start with double quotes, close with double quotes. Now, suppose I'm giving the one here example. I take one variable address. I'm using here 145 JP Nagar. It's okay, fine, nice. If I type address, here is. But now string literals are of two types. How many types? Two types. Deepak, string literal are of how many types? Two types. Two types. Very good. One is called, which I have already used, single line. Single line में हमने एक ही पूरी string दे दी. No issue. Second is called multi-line. What I'm using? Multi-line. It means by name it is clear. We are giving the value in multiple lines, like address equal to double quote start 145. जैसे मैंने enter की press की, there is an error. Now how we can give the values in multiple line? There are two methods. Look at here. Address equal to you will use 3 times single quotes or 3 times double quotes. उसके बाद 145 press the line, enter key, type JP Nagar, then I use comma, I press enter key, Jalandhar, then 3 times single quote or 3 times double quotes closed. Then I press enter key, there is no any error. Look at here. Students, concept is clear. Here slash n is used here. ये indicate कर रहा है कि मेरा ट्रिपल कोट्स क्यों डाले आपने? 3 times single quote डालना है या 3 times double quotes? Reason is you are going to give multi-line string. Okay? Yes sir. ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन शो कर रहा है कि यहाँ पे लाइन चेंज हुई है, आपने एंटर की प्रेस की है. और इसका एक सेकंड मेथड, एड्रेस आपने क्या करना है, इक्वल टू, आपने सिंगल कोड यूज की है, यू विल यूज 145, देन जब आपने लाइन चेंज करनी है यहाँ पे स्लैश दे दो, सिंगल स्लैश देनी है, then again slash, then Jalandhar, then double quotes या single quotes close कर दो. There is no any problem, no any issue. Look at here, data is accepted. Yes student, is it clear how you can give multi-line string? सर ऊपर हमने जैसे एड्रेस डबल कोट्स में दिया, बट आंसर हमें सिंगल कोट में आ रहा है. No any issue beta. So Okay sir. Python is giving us in single quote, we can give in single quote or double quotes, no any issue. Now tell me, two methods are clear? Yes sir. Okay students, time is over. So please revise these things, because these are the basics. These are the building blocks of your programming language. Okay students, take care. Time is over. I am closing the meeting. Take care. Bye.